सो ओवरऑल 34,100 के ऊपर अच्छा हो जाएगा। क्लोजिंग, हाँ क्लोजिंग चाहिए, मंथली क्लोजिंग चाहिए 34,100 के ऊपर, तो बच जाएंगे ऐसा समझो बस फिलहाल के लिए। मतलब आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट देके आए हैं, बच जाएंगे। हाँ अभी फ्लोर टेस्ट होने वाला है तो हम भी थोड़ा सा फ्लोर टेस्ट कर लेते। तो ये ना पॉलिटिकल बात करके आए, मैंने आपका स्टेटमेंट देखा था तो मुझे समझ में आया पॉलिटिकल बात करने आए। किसी को कंफर्म मंथली क्लोजिंग अगले 2 दिन में मंथली क्लोजिंग कहाँ पे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से फिर देखते हैं क्या होता है। हाँ मतलब आउट ऑफ बैंक निफ्टी कभी कभार आप निफ्टी भी ट्रैक कर लेते होंगे कि नहीं करते, कभी भी निफ्टी देखते नहीं देखता लेवल्स के हिसाब से नहीं, इन्हें मे बी लेवल होगा कोई 15,200 ऐसा या फिर 16,200 उतना देख लिया तो देख लिया, बाकी तो नहीं। अच्छा बैंक निफ्टी जब आप देखते हो तो कोई आप स्टॉक्स देखते हो कि स्टॉक्स भी नहीं देखते? नहीं स्टॉक्स नहीं, बस इंडेक्स का चार्ट, क्योंकि देखो जो स्टॉक्स में होने वाला वही इंडेक्स तो दिखाई देगा ना कि इंडेक्स में क्या होने वाला है। तो इसको बोलते हैं फोकस अप्रोच कि भैया मुझे यही चीज ट्रेड करनी है, मुझे एक ही चीज में काम करना है। ये शायद हम लोग नहीं समझते कि फोकस अप्रोच कैसा होता है। जब हम लोग बोलते हैं ना हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो हमारा फोकस ही निफ्टी बैंक निफ्टी, शायद हम कुछ सोचते भी नहीं। कोई बोलेगा हेग में क्या हुआ, ग्रेफाइट में क्या, हमें नहीं पता। सो दैट्स या विजय भाई प्लीज गो। हाँ देखो ये हमारे इसमें स्पेसेस में मेरे गुरुजी भी है यहाँ पे, वो भी वही बताएंगे, उन्होंने भी वही सिखाया मुझे, तो मैं वही अप्रोच इनवाइट कर देता हूँ। जितेंद्र सिंह सर अगर वो रिक्वेस्ट भेज सके तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आप उनको रिक्वेस्ट अगर आप सुन रहे हो तो आप प्लीज रिक्वेस्ट भेजिए। वी वुड रियली लव टू हियर योर व्यूज जीत भाई। Till then Vijay bhai you can continue. हाँ तो यही व्यू है कि 32,500 नीचे की तरफ अगर ब्रेक हो जाए तो 30,250 दिख रहा है, और ऊपर 34,100 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमको, मंथली क्लोजिंग जो 30 तारीख एक्सपायरी है, तो वो दिन पे अगर 34,100 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो बच गए, नहीं तो फिर 30,250 ओपन है नीचे। तो बस इतना ही व्यू है फिलहाल, और एक्सपायरी बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगी, तो सब लोग जो भी ऑप्शन बायर है सेलर है प्लीज थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड संभाल के ट्रेड कीजिए, बिकॉज बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगी दोनों साइड में। तो बस उतना ही कहूंगा कि कॉशियसली ट्रेड कीजिए, जितना मिनिमम कैपिटल के साथ कर सकते हैं बेटर है, ज्यादा ओवर लेवरेज या फिर ज्यादा रिस्क ना लेना, बस यही कहूंगा। डॉक्टर साहब आपको भी रिक्वेस्ट भेजना है, योर व्यूज अबाउट एक्सपायरी इफ यू कैन कम ऑन। मतलब यहाँ इतने सारे डॉक्टर हो गए ना, किसको डॉक्टर बोलूं मैं, अब नाम लेना पड़ेगा, रवि नाम लेना पड़ेगा, या आशु नाम लेना पड़ेगा, प्रशांत नाम लेना पड़ेगा। हमारे ओरिजिनल डॉक्टर तो बाकी 2 डॉक्टर हैं, ये हमारे पीएचडी वाले डॉक्टर साहब हैं। पीएचडी वाले डॉक्टर साहब टिल देन वी हैव गुरप्रीत राजी। गुरप्रीत राजी योर व्यूज, आज तो आपके लेवल के ऊपर क्लोज हुआ। जय हिंद और सत श्री अकाल। सत श्री अकाल प्राजी, गो अहेड प्लीज। सर एक्चुअली अभी विजय जी ने जो बोला है एग्जैक्टली बैंक निफ्टी को अगर मैं निफ्टी से कोरिलेट करूं तो ऑलमोस्ट सेम यही लेवल बनते हैं। तो आप ये लगाइए कि निफ्टी की क्लोजिंग और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग इस मंथ की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये यानी कि 1 साल की जो मेहनत है उस पर पानी फिरने वाला काम है ऑलमोस्ट। क्योंकि बैंक निफ्टी का जो सर ने लेवल बोला वो तो एग्जैक्ट बिल्कुल डॉट है, बट डाउन साइड का लेवल मेरा थोड़ा सा 400 पॉइंट नीचे है, मेरा 29,850 और 780 के बीच में है डाउन साइड का लेवल। अगर वो लेवल ब्रीच यानी कि उसके ऊपर क्लोज नहीं देता है, 34,150 के ऊपर क्लोज नहीं देता है मंथली। और निफ्टी में भी मेरा सेम व्यू है, अगर 16,200 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है तो इट विल बी यानी कि बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन हो सकती है, बट वो स्लोली होगी डाउन साइड पे, फास्ट मूविंग नहीं होगी, स्लोली होगी।
स्लोली और ग्रेजुअली, यानी कि परेशान कर देगी बुल्स को कि ये हो क्या रहा है, वैसी सिचुएशन हो जाएगी। बस यही ऐड करना था मैंने। विजय भाई, वो जितेंद्र जी को मैसेज भेजा है, मतलब रिक्वेस्ट भेजा है, सॉरी, तो उनको आप बोल। ठीक है ओके। जगवीर रिक्वेस्ट भेजा, एक्सेप्ट करना भाई। जगवीर गो अहेड। यस अमित भाई, निफ्टी में आज तो लो से बाउंस बैक दिया है और अभी भी वही गैंग के 2 लेवल एक्टिव ही है। जिस तरफ ब्रिंच होगा वहां पर निफ्टी तोड़ेगा। 15,640 वो लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है, मार्केट 16,100 का मेरा जो लास्ट टारगेट है 130 समथिंग जो भी है वो एक्टिव ही है। और बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट डोजी क्लोजिंग दिया है, तो कल का क्लोजिंग इम्पोर्टेंट है और ये क्वार्टरली भी एक्सपायरी रहेगी थर्सडे को। तो बैंक निफ्टी में 33,250 समथिंग अगर कल चांस मिलता है तो लॉन्ग करना चाहिए, ओनली 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस से। और जब ये 34,180 के ऊपर क्लोज दे देगा तो नया गैंग लेवल का क्यू स्टार्ट हो जाएगा, तो आराम से उसके ऊपर 800 टू 1200 पॉइंट निफ्टी का मूव आराम से देखने को मिल जाएगा। तो अभी भी ये रेंज में ही है, ये बहुत ही रेंज में। तो जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा तो आज बाउंस दे दिया बिल्कुल निफ्टी ने। जब ये 100 पॉइंट ट्रेड हुआ था तभी मार्केट ग्रीन में चला जाएगा वो डिक्लेयर हो गया था और वो हुआ भी। और अभी भी पोजीशन जिनकी शॉर्ट है हायर लेवल से वो कट नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। और ये 2 दिन बिल्कुल इम्पोर्टेंट रहेंगे और कल भी शायद बहुत ही लिमिटेड रेंज में ही रहेगा, जैसा आज हुआ वैसा, बहुत ही ज़्यादा नहीं। 80-100 पॉइंट का जो भी मूवमेंट ऊपर नीचे मिलेगा बिल्कुल होगा, लेकिन ज़्यादा बहुत बड़ी मूवमेंट थर्सडे को ही होगी। और थर्सडे को अगर इसने 15,750 के का लेवल अगर बचा लिया और उसके ऊपर क्लोज देता है तो ये फ्राइडे को 16,000 का लेवल बता सकता है। ये व्यू है अभी इस शॉर्ट टर्म के लिए। दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, 15,640 लोअर लेवल पे, अगर वो ब्रेक करता है उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर डाउन और जाएगा। 300 पॉइंट पकड़ लेना यहाँ से, और अगर 15,750 बचा लेता है तो वहां से 300 पॉइंट पकड़िए अप साइड के लिए। क्लियर व्यू। अमित भाई, Any stocks, Jagveer, you're looking at? स्टॉक में अभी बस वो पिछली बार जो निकाल के मैंने बताया था वो सारा हो गया, लेकिन अभी कोई स्टॉक को मैंने नहीं अभी स्टडी किया है। इंडेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस है अभी। पीयूसी बैंक्स में अच्छा खासा बाइंग इनसाइट हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसमें कुछ बहुत आगे जाके बड़ी व्हीकल हो सकती है। कंटिन्यूस लोअर लेवल पे एक्यूमुलेट हो रहा है लॉन्ग उसमें पीयूसी बैंक्स में। वो पहले भी मैं पिछली नहीं बार बता चुका हूँ। ये इनसाइड बाइंग मतलब आप थोड़ा समझाएंगे, मतलब मैं नहीं, एक्चुअली डिलीवरी बेस्ड और फीचर लेवल पे डिलीवरी एक्यूमुलेट हो रही है और फीचर लॉन्ग डेवलप हो रहे हैं उसमें। दैट ये मेरा है, बाकी और कोई मैसेज नहीं है अंदर से। उसमें डिलीवरी एक्यूमुलेट हो रही है और उसमें फीचर भी लॉन्ग डेवलप हो रहे हैं जुलाई के लिए।
और रिलायंस रिलायंस की जो बात थी, तो रिलायंस में आज का लो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आज का लो नहीं होता है और कल 10 रुपए भी ऊपर क्लोज देता है और 10 रुपए ऊपर भी टिक जाता है आज के क्लोजिंग से, तो वो भी आराम से 3 to 8% जंप दे सकता है फ्राइडे तक रिलायंस में, क्योंकि लास्ट हाफ ओवर में अच्छा खासा उसमें लॉन्ग डेवलप हुआ है रिलायंस में। बाकी अगर कल 100 पॉइंट 80 पॉइंट अगर गैप डाउन मिलता है तो ऑनेस्टली 15,640 का स्टॉप लॉस से क्लोजिंग का ही पकड़ूंगा मैं, उससे लॉन्ग जाना चाहिए। क्लियर है? थैंक यू अमित भाई। अमित सर आप कुछ बोल रहे थे बीच में। अरे मेरा है ना वो इसके हेडफोन की वजह से ना ऊपर नीचे हो रहा है सारा, तो मैं 5 मिनट में ज्वाइन करता हूँ। मैं 5 मिनट में है वापस। सनी प्लीज ज्वाइन करो ना, और डॉक्टर प्रशांत आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, या आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, ज्वाइन करिए। Fabio? Yes, sir. Yes. Tell me. So when you say अक्टूबर तक आपको लग रहा है, is it because of 1 year happening or something? No. So I have, like, there are a couple of reasons. Not actually. I have 2 to 3 reasons that point out in the same direction. One is winter will set in. So this Russia-Ukraine war would have to. Well, Europe will want that war to end because there would be, otherwise there would be a shortage of gas. And surviving winters without gas would be impossible. That is one thing. Again, the second point that I had said was between always a bottom is formed between 9 to 15 months. तो ये 9th month तो अभी अपना लगा है, 15th month would be around December. So somewhere in between is what October would come into picture, and by then we would also come to know what is happening on the interest rate hikes. तो वो कितना इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, क्योंकि दिसंबर नजदीक आ जाएगा, फेड भी क्लियर हो जाएगा कि क्या बोलते हैं उसको, if there is a recession, how bad it is, or is it just going to be, downturn activity or downturn economic activity. So वो तब तक है ना पिक्चर क्लियर हो जाएगा. So there would be a lot more visibility. इंडिया का भी मानसून सीजन खत्म हो जाएगा, देख लेंगे कैसा हो गया है, हाउ इज द डिमांड पिकिंग अप. और क्या होता है कि अक्टूबर ये जो मानसून का पीरियड होता है ना, इसमें रियल एस्टेट सेल्स भी बहुत कम होती है, एंड इंटरेस्ट. अब हम लोग को भी देखना पड़ेगा हाउ आरबीआई इज इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया. सो वो भी पता चल जाएगा अक्टूबर तक, और उसका इफेक्ट भी पता चल जाएगा. बिकॉज इफ यू अरविंद सुब्रमण्यम, MD of Mahindra Lifespaces, he was the first one to say that there would be impact of rate increases on real estate sales. Otherwise, I was bullish. But then, after hearing him, I spoke to a few of the guys on the ground, and even they were like that real estate sales have actually declined in मुंबई टू. तो वो भी पता चल जाएगा कि ये गणपति के बाद सेल्स भी पिकअप होना चालू होती है. तो सो दिस इज वेयर आई एम लुकिंग कि ये एक काइंड ऑफ एन कंजंक्चर है कि यहाँ से इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो सकता है अक्टूबर में, कि एक प्रॉपर व्यू मिल जाएगा मेरे को. सो दैट इज व्हाट आई एम वेटिंग फॉर. Fair enough. यस सनी भाई, प्लीज गो. सनी भाई आप. Hi. Actually, Pavilya ji and Ranvir ji, your आपका request आ रहे थे. I am a little caught up. Just give me 2 to 5 minutes. I'll definitely give my view. That's why I was not accepting the speaker request. Just give me 2 to 5 minutes. I'll be back. Fair enough. Fabio, one fundamental question to you. See, with this move in
dollar INR, USD INR. Uh, See, anybody, any FIA who's probably selling part of his long term is probably selling in pain, a bit of pain, because in dollar terms, we have already discussed few times that the gains haven't had been as much as what we tend to, look at our normal INR based index charts. So, with INR depreciating more and more, any selling right now happening by FIIs from their long term things is actually being sold in a pain sort of a scenario. Short term, uh, uh, we have seen these days FII like behaving like us only in terms of trading and other things, but the positional views changing is especially at these kind of levels of INR. It would have been more of a accumulating zone for them if their personal pains haven't had been there. So what's your view on this or take on this? FII outflows, yes, rupee level of rupee would be one of the consideration, but that would definitely not be the consideration. A lot has to be how their local economy is playing out. तो वहाँ आप देखो उनको पैसा तो निकालना था एज क्यूटी हैपेंस पैसा तो वो लोग निकालेंगे ही बिकॉज देयर रेट्स आल्सो इंक्रीजिंग एंड दे वुड आल्सो हैव टू क्लोज देयर leveraged positions in their home country. But I don't know. I mean, I guess I had said this earlier on the spaces. FIIs will have to come back, and I mean, they will not only stop selling, but they will also start buying, and they will definitely would have to come back. The reason I say this is you got to understand what are the, if I ask as an FI, I mean to an FII, what are the options they have to invest globally. China, they know that the government is going to come and it is going to screw them up. If I mean, जो उन लोग का क्रैकडाउन होता है दैट इज हे वायर, जब भी गवर्नमेंट का मन चाहिए तभी वो सेक्टर को पकड़ के इट स्टार्ट्स बैचिंग इट. So China is, and they have experienced it, and that is why the entire China plus one model has come into the game. So China is not there. US में tech बढ़ता है. US doesn't have any other industry as of today that is booming. Like tech है, पर tech में कितना you cannot concentrate on. Like they would also need to diversify. So China is out, US only tech is there. Russia is totally out. Europe GDP is down. Japan is not giving. Japan will face a lot of inflation, and it's not. It has not given historically for past 10-12 years. It has not given respectable returns. तो जाएगा कहाँ FII? I don't see any other option with that FIIs have at this juncture. So इंडिया में वापस आना ही है sooner or later. Even they might also be waiting कि यार एक बार थोड़ा यूएस का सेटल हो जाए कि कैसा होने वाला है, what are the paybacks that they have to give, how much QT is happening. वो लोग भी internally funds decide कर लें कि how much they are left with. So once they would need a clear picture. अभी तो क्या अभी Powell comes and says something else when he is doing a conference, and today they gave a statement that and they are expecting an inflation of 8%. So let things settle. Let things settle, and we will see them come back sooner or later. We will see them come back. Yes, sir. Please. Yes, Have you one more fundamental question? Have you gone through a bit of this? The new infrastructure plan announced by new. Oh, sorry, called him. The new infrastructure plan announced by the G7 around say $600 billion in uh, probably you can say competition with the Belt and Road of China. Uh, and probably whenever you talk about infrastructure, all the commodities play does come in. So have you gone through a bit of that or like? No, it has just been announced today, the $600 billion infra. But Biden had been planning that, and there was a statement that China will eat away our cake and all that stuff. So they had to come up with it, and this, I guess, this would be primarily for countries in Africa and South America,
where China is, China is not, I wouldn't use the word takeover, but China is making its presence felt in America's home yard. So they had to do it, and America alone at this juncture wouldn't. They would definitely open their allies because सबका फायदा अब होने वाला है उससे. So it's bullish for definitely for metals and for the entire infra sector. Even India is going to spend, and India is going to spend a lot on infra. I have said, Kali Gati Shakti is like of around 1 lakh crore. So just imagine what we are going to spend on infra. So yes, bullish on that sector too. But let's see how it plays out. So अभी है ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है रणविजय भाई. 3 to 4 months से कंफ्यूजन रहेगा, and then we can see pick up like anything. At least that is my point of view. Okay. To FII point, I'll post a data tomorrow. अगर हम प्रोविजनल FII डेटा देखेंगे ना, तो मुझे नहीं पता कितने लोग 2000 फ्रॉम 2006 वो डेटा फॉलो करते हैं. मेरे पास है सब पूरा डेटा. तो उसके हिसाब से है ना, FII नेट नेगेटिव सेल नाउ इन कैश मार्केट. नेट नेगेटिव सेल का मतलब हो गया कि वो कहीं से उधार लेके माल बेच रहा है, ऐसा नहीं. दे आर स्टिल होल्डिंग 19 to 18%. अब लेटेस्ट जब क्वार्टर का जून क्वार्टर का आएगा तब समझ में आएगा उन्होंने और क्या एग्जिट किया. स्टिल दे आर होल्डिंग 18% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर ऑफ इंडिया. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का अगर मार्केट कैप रफली पकड़ते $3 trillion, they are still holding $600 billion worth of Indian market cap. उसके बाद भी 2006 से जो ऑफिशियल डेटा अवेलेबल है, ऑफिशियल जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से वो नेट नेगेटिव हो चुके. एंड जो डेटा अवेलेबल है DIA का, DIA उसके हिसाब से इज ऑलमोस्ट एट 6 लाख करोड़ रुपीस. 6 लाख को कन्वर्ट कर लो आज की डेट में तो आपको पता पड़ जाएगा कि DIA ने प्लस DIA के पास मतलब जो म्यूचुअल फंड रहेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से रहेगी, जो एज अ DIA रजिस्टर्ड है, उन सबने 6 लाख करोड़ का माल लिया है. ठीक है, मैं उसका डेटा चेक कर रहा था वापस मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे. ठीक है, तो उन्होंने जब लिया था ना, बहुत नीचे लेवल पे लिया था. कोई 5,000 रुपए लेवल पे लिया, कोई 4,000 लेवल पे लिया. वो तो एवरेज प्राइस भी पकड़ के चलेंगे तो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं यार. उसमें क्या हो गया, FII का डेटा देख के क्या डरने का. उसमें IPO में उन्होंने जो पैसा डाला वो तो आ ही नहीं उसमें. तो कल मैं वो भी डेटा निकाल के ना पूरा पिक्चर प्रेजेंट करूंगा. ये FII का जो डेटा देख रहे हैं, जो रोज NSE खुद अपनी साइड पे लिखता है, मैं 10 बार बोल चुका हूँ कि भैया वो डेटा प्रोविजनल है. वो NSE की वेबसाइट खुद बोलती है दिस डेटा इज प्रोविजनल, go and check final figures from CDSL website, which and our data doesn't include the money that they have put in IPOs. मतलब प्राइमरी मार्केट का जो पैसा है, IPO हो गया, FP हो गया, राइट इश्यूज हो गया, रिलायंस 15 तो उसमें उन्होंने भी 60 दे रहे हैं उनको. तो डेटा ब्रेकिंग, योर वॉइस इज नाउ ठीक, नाउ बेटर. बीच बीच में अब ब्रेक हो रहा है, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर. ये कौन सी इंग्लिश है? नोट अमित सर, आपका बहुत डिस्टॉर्शन आ रहा है, वॉइस ब्रेक हो रहा है. भी आ रहा है, आपका आवाज बीच बीच में आ रहा है, बट बड़ा डिस्टॉर्शन सा आ रहा था. अभी आ रहा है. हाँ, आप बेटर है. बोल रहा हूँ कि भैया वो डेटा है ना, प्रोविजनल मत देख के जाओ कि वो टीवी वाले मीडिया वाले जो दिखाएंगे ना, वो प्रोविजनल डेटा मत पकड़ो. एक्चुअल जो डेटा NSDL की वेबसाइट पे अवेलेबल है ना, अगर मैं FII का डेटा 2006 पकड़ के चलता हूँ तो आज के हिसाब से तो नेगेटिव है. मतलब वो कैश मार्केट में शॉर्ट कर रहा है. बट वो 1991 से इंडियन मार्केट में, जब रिलायंस का भाव पता नहीं क्या होगा, किसका भाव क्या होगा, एंड आज भी वो 18 to 19% मार्केट का होल्ड करते हैं. तो कल मैं पूरा डेटा रखूंगा जितना अपने पास अवेलेबल है. जो अपने पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसका 18 to 19% if they are holding. For example, we are a economy of $3 trillion. 10-20% नीचे कर लेना उसको, उसी का डिस्काउंट करके FII का होल्डिंग पकड़ लेना. FII का स्टिल होल्डिंग अ मेजर चंक आफ्टर, मतलब आफ्टर प्रोमोटर्स FII वो मेजर चंक इन मेनी कंपनीज. FII अकेला, मतलब FII में बहुत कैटेगरीज रहेगी. FII में कोई लॉन्ग टर्म फंड रहेगा जो 20 साल के लिए आया, 30 साल के लिए आया. FII एक रहेगा जो आर्बिट्राज के लिए आया, यहाँ सट्टा मारा, कैश में खरीदा, फ्यूचर में बेच दिया, फ्यूचर में खरीदा, कैश में बेच दिया, जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिली.
तो उस डेटा को सिंगल ऐसे ही पकड़ेंगे ना, एफआईआई बेच रहा है तो हमें बेच के निकल जाना, वो डेटा पढ़ना ही गलत है यार। उस तरीके से डेटा नहीं पढ़ा जाता है। हमें वो डेटा पढ़ते हुए 15-15 साल हो गए, तब जाके समझ में आया कि इस डेटा को पढ़ना कैसे। तो एक दिन का डेटा पकड़ के, 4 दिन का डेटा पकड़ के, 1 साल का डेटा पकड़ के वो डेटा नहीं पढ़ा जाता है। वी हैव हर्ष एंड सनी वेटिंग ओवर हियर, सो लेट देम कंटिन्यू, आई विल जॉइन बैक, क्योंकि मेरा शायद कुछ वॉइस ब्रेक हो रहा है। हर्ष और सनी, एनीवन कैन गो अहेड। दोनों इलियट हो, दोनों इलियट तो इलियट में जो कौन सी वेव चल रही, कौन सी नहीं चल रही। हमें सिर्फ हमें लास्ट में ना सिर्फ लेवल दे देना, ये लेवल दिखता है, बाकी वेव्स में बढ़ जाना 1 है, 5 है, 3 है, 2 है, हमें कुछ लेने देना नहीं उससे। ओके, सो निफ्टी में रेंज है कल से 15,700 15,900 के बीच में कंसोलिडेट हो रहा है अभी। जब तक ये रेंज तो कोई भी साइड पे ब्रेकडाउन नहीं आता तब तक रेंज में ही रहेगा, शायद कल भी। और डाउन साइड में 15,700 15,670 का सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे नहीं जाता बेरिश तो नहीं लगता मुझे मार्केट, बट ऑब्वियसली ऊपर में 15,900 का रेजिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए। तब जब तक वो नहीं होता तब तक रेंज में रह सकता है। सो आई वुड वेट फॉर एनी साइड ब्रेक, आइदर डाउन साइड 670 के नीचे या फिर 900 के ऊपर। मुझे डाउन साइड थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि एक बेस बनाया है और अभी शायद सपोर्ट लेगा 670 15,700 के आसपास। और अपसाइड में 900 के ऊपर जाएगा तो फिर ऑब्वियसली आई वुड बी एक्सपेक्टिंग 16,200 तक का लग रहा है ऑन अपसाइड। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा वीक है, आज वीक था इतना। I guess the voice went away. Am I audible? या Vijay? मेरा नहीं आ रहा है वॉइस? नहीं आप दोनों का आ Am I रहा है, audible? आप दोनों ऑडिबल हो। कंटिन्यू हर्ष। ओके, हाँ, सो बैंक निफ्टी में 33,500 का सपोर्ट जोन है, 33,500 450 उसके नीचे वीक हो जाएगा बैंक निफ्टी में। ऑन अपसाइड 33,800 900 इज द रेजिस्टेंस जोन। सो ये 400-500 पॉइंट के रेंज में जब तक है तब तक तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इधर ऑन अपसाइड या फिर डाउन साइड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आने के बाद ही ट्रेड बनता है। डाउन साइड की मुझे पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, क्योंकि एक्सिस बैंक अच्छा लग रहा है, आईसीआईसीआई बैंक कंपैरेटिवली अच्छा है, एसबीआई इज होल्डिंग स्ट्रॉन्ग, कोटक वीक है। तो आई मीन देखेंगे कहाँ कौन से साइड पे मुझे ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है, लेकिन आई विल वेट फॉर दैट। बाकी इंडेक्स में आज रिलायंस स्ट्रॉन्ग हो गया है और अबाउट 2550 एक अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। जो रिलायंस से जो प्रेशर आ रहा था डाउन साइड में सेलिंग में, वो तो ऑब्वियसली अभी कम हो रहा है। आज अच्छा कैंडल भी दिया है, तो ऑब्वियसली आई विल लाइक टू सी फॉलो अप बाइंग इन रिलायंस। आईटी स्टॉक अच्छे है, टीसीएस, इन्फोसिस। सो आई मीन डाउन साइड प्रेशर कहीं से आते हुए दिख नहीं रहा मुझे मार्केट में, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ कि अपसाइड में एक बार रेंज ब्रेक करके ऊपर जाए, then we can see continuation on the upside. That's it. Shall I go ahead? Yeah, sir. Yeah. So basically, if you see the Nifty pattern, which is happening from the recent swing lows, which is 15,100 जो है, वहाँ का एक specifically if people can watch it right now, what I'm trying to say, people can try and open their hourly charts and of Nifty and check 12th में और 13th में से लेके 3rd जून का जो पैटर्न है. It is said that history does not repeat, it rhymes. So just to give an idea of what fractals are, एकदम short term में दिख जाएगा. This is the same pattern is happening, almost similar pattern is happening. What had happened in between this period. So I mean, and looking at the clear structures from the lows, I mean, for me, important was what we had discussed in the previous. I mean, I'll give you the bigger picture was कि 15,200 400 पे क्या हम बॉटम हुए
नहीं हुआ है ऐसे चांसेस हो सकते हैं, बट ऑब्वियसली वी नीड एविडेंसेस. Looking at the structures which are the wave is building up on smaller time frame charts, it's looking the same pattern which happened between 15,700 to 16,800 thereabouts. Almost similar. आप अर्ली चार्ट्स खोलोगे आपको खुद को ही काफी सारी चीजें आई मीन रिवील होने के चांस हो सकते हैं. तो पैटर्न इज नॉट कन्विंसिंग टू मी, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट सेइंग कि इमीडिएट फॉल है. इट इज स्टिल इन द बाउंस. आई थिंक आई वुड नॉट बी रॉन्ग टू एक्सपेक्ट कि यहाँ से 16 to 16,200 के बीच में एक मूव पॉसिबिलिटी दिखती है. वहां से क्या रिएक्शन आता है दैट वी हैव टू सी. So I mean, broad point is it is almost the similar pattern which it made it during that period of 30. Obviously, it is more concise right now because time-wise, if you see, we are more squeezed. लेकिन pattern जो अगर वो proper structure था, उसका miniature version चल रहा है, is what I can visualize at the moment. So I mean, it's still according to me, it's just a bounce. It's not a proper impulsive structure or a bullish structure. As of now, I see repetition and I feel we would again, sooner or later, we'll again move back to the low sides of the market. That's it on Nifty. Sunny, Bank Nifty or any other stocks, sectors? So Bank Nifty, I mean, I'm not tracking much, but it is relatively appearing to be weaker than Nifty at the moment. But I will definitely look at Nifty first and move on to the sectors. Stock specific, nothing specific right now. Metals again, I feel we are in a bounce mode. Once this bounce mode is over, again selling is should be visible. Important is in the next leg. If first of all, if we get a sell off whenever after this bounce is over in metals, next sell off, very important. What are the characteristics of the fall? If the characteristics appear to be what do you call creating a lot of fear or people just moving out or staying away, I think I would be starting to look at it from in longer term point of view, not immediately. I mean, not as a trade. Absolutely. So basically you mean metals में और means Nifty में भी एक downside एक शायद pending है, but that will be the final. That's what you want to say? Yeah, I mean, see, I'm just taking one step by step as of now because bigger picture we'll get. We are just trying to whatever you have those in those MCQ questions होते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं. So you're just striking out कि भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है. That is what I'm doing at the moment. I'm not doing anything else because let it come. When it comes, it will be very much clear, and it would be clear on small cap, mid cap also. It would be clear on sectoral also. It would be clear on Nifty also. This is what I believe. Right. यार possible है तो wave count डाल दे यार हम लोग को भी देखने. Sure, I'll try to put it up. A little busy, caught up with my professional work also, but just say I'll get free time, I'll do that. Sure. Thanks. सनी पैसा ले लेना इससे. इलियट का काउंट पूछता ना, पैसा ले लेना इससे. बराबर. CFE में थोड़ी एडवाइस देता है कुछ. उसमें से फिर मेरा भी हिस्सा दे दे. मजाक कर रहा हूँ. नथिंग मोर देन दैट. वरना बहुत मोनोटोनस हो जाता है लेवल कर करके ना. थोड़ा मोनोटोनस हटाने के लिए कभी-कभार एक दूसरे की टांग खींच लेनी चाहिए अपनी. So Ayush, I have sent you a request if you can please join in. बहुत टाइम हो गया तेरी आवाज नहीं सुनी अच्छे से. Okay, if nobody is coming, then 10 minutes or 15 minutes of question and answers, purely Nifty और large cap stocks. कोई mid cap track करता रहेगा तो जवाब दे देगा आपको. तो send in request, one by one we'll accept. One by one. और क्वेश्चन को बहुत लिमिटेड रखना है अपना. अगर आपने कोई स्टॉक में एंट्री ले ली है तो एंट्री कहाँ पे ली है, क्या क्वांटिटी लिया है,
किस रीजन से लिया है वो बता देना, तो हम शायद आंसर कर पाएंगे। सिर्फ हवा में ये पूछने जाओगे कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, पहले हमें आपका रीजन पता होना चाहिए कि आपने एंट्री क्यों लिया था। अगर आपके पास रीजन ही नहीं है एंट्री करने का, तो हमारे पास भी कोई रीजन नहीं है उसका आंसर देने का। तो आयुष इज ओवर हियर। आयुष, योर व्यूज अबाउट मार्केट, निफ्टी, बैंक निफ्टी, stocks, go ahead please. Sure, thanks, yeah, Amit. So I'm very neutral right now because I am seeing a lot of selling on the upside, and on the downside I'm seeing there is accumulation again going on, maybe due to expiry or whatever the reason may be. But I see expiry should be between 15,650 to 15,950. The 300-point range is what I am looking at within the next 2 days. That's where I expect the expiry to be. Not a So basically 100 150 points up or down from here is what I'm expecting. Again, I don't expect very big moves. Even after this expiry. So basically, by 30th June, this expiry should get over. But by 10th of July, if there are some good news across Ukraine or something, then only I see upside. Otherwise, 16,200 is where I see the resistance coming in, and 15,500, 450, 500 is where I see the support. That's the holistic view that I have. I joined in late, so I'm not sure what others gave, but this is what I see at this point of time. Stock specific, there are some pockets where I am bullish, wherein if in the old chats or spaces also I had given MRPL, I again am bullish on it because crude is rising, and that is one of the picks that I am again bullish on. Uh, Along with that, even Chennai Petro. So these are pockets in which I am bullish in. Along with that, I see some accumulation in small banks, basically Federal Bank, mid cap banks, not small banks. Sorry, uh, IDFC First Bank, even IndusInd Bank. I see there is some accumulation going on, and some open interest being built up. So these are the pockets where I see long build-ups seen. Along with that, there are short build-ups that I see in Kotak large cap bank, as well as some long build-up even in SBI. So these are my favorite picks, and I'm using those trades with stop losses, which I feel is very important in such a market where volatility is extreme. On the shorter side, I do see Maruti not crossing 8550. So I know it is a very strong counter. I've been taunted also for that, but I still feel there is a short one can play with a 50 rupees stop loss is my disclosure out here. Am I audible? Yes, totally audible. If I am audible. All right, that's all from me. But great to see you guys having the same spirit always and doing the great work. Kudos to you, Amit. आयुष, वन पॉइंट, Yes. आपका लॉन्ग टर्म अगर व्यू ले, मतलब 2-3 महीने क्या लग रहा है निफ्टी बैंक, मतलब स्पेशली निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी भी चलेगा, बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो निफ्टी नहीं चलेगा, तो दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव है. See, honestly, if you ask me, 2 to 3 months view, I would say that if 15,200, which was a temporary bottom right now, is held, right, we may see 16,800 or 17,200 again, which is something which is not out of the books. The only concern is that this Ukraine war is never-ending story till now. But somehow I expect some kind of resolution to this, because it's been extended too long, and US summers are also going to end around August. So by August, I see even crude prices and everything should come down. Is what my expectations are, because if you see December futures and all are trading at
very highly discounted price already. So there are factors which are being considered. They are saying that they are even US is trying to improve the production of oil. So a lot of things will change during the course of time. So within the next 2 to 3 months, if there is a big if over here, Ukraine crisis are solved, I see Nifty going back to 16,800 to 17,200 also. Otherwise, I don't see any reason why we should go to below 14,900 because it is expected that rainfall in India is also going to be good. So rain always gives good vibes to India. So this is how I see next 2 to 3 months, because monsoon is already here. So things should improve is what I feel. But again, it's market. It's no one's own game. It's how the market sentiments will play. So, डॉक्टर साहब, आपका क्या व्यू क्रूड के लिए, क्योंकि आप क्रूड बहुत नजदीक से track करते हो? क्रूड तो बुलिश हो रखा है अभी लास्ट 3 डेज से, मतलब 5-6% अप हो गया है, तो अभी लॉन्ग ही चल रहे हैं. इनिशियली लग रहा था बट डॉक्टर साहब, मैं 2-3 महीने का भी पूछ रहा हूँ आपका. तो मैं एक्चुअली दिन भर ना चार्ट देखता हूँ, जैसा चार्ट चलता है मैं वैसे ट्रेड करता रहता हूँ, बाकी कुछ नहीं सोचता. फेयर इनफ. अभी कितना ऊपर है? 5%? हाँ, लास्ट 3 डेज में 5% अप हो गया. अभी जो क्लोजिंग हुई है 8812 पे हुई है, और उस दिन हमने स्विंग जो सपोर्ट की देखा था वो लगभग 1 मिनट, हाँ वो 8000 के आसपास बना, वहां से रिबाउंड कर गया. एक्चुअली अभी जो समिट हुई ना उसमें कुछ ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने रशियन ऑयल पे और मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाने का बोला है, तो इस वजह से शायद रिबाउंड करेगा वापस वो. So then this is good for Russia itself, right? हाँ, उसका ऑयल नहीं लेंगे तो शॉर्टेज रहेगी ओवरऑल. मतलब अगर रशिया का और ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो कहाँ से लाएंगे, मतलब. और सऊदी अपनी फुल कैपेसिटी ऑलमोस्ट यूज़ कर रहा है 90% ऑलमोस्ट. अभी ये बोल रहे हैं, अभी चल रही हैं बातें फ्रांस के, उनने बोला है शायद बिडेन से कि यूएई को बोलो कि प्रोडक्शन बढ़ाएं. तो देखते हैं. अभी तो बुलिश हो रखा है, मतलब बिल्कुल टॉप पर ही है अभी. क्रूड का भरोसा नहीं रहता, कब गिर जाए कब उठ जाए, तो बहुत वॉलेटाइल होता है, इसलिए मैं ना कोई व्यू नहीं बनाता हूँ. और चार्ट एक स्क्रीन पे चार्ट ही रहता है 24, मतलब जब तक मार्केट चलता है, और मुझे जैसे सिग्नल मिलते हैं तो वैसे ट्रेड करते रहता हूँ बस. क्रूड में अभी शॉर्ट टर्म में तो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, लेकिन आज के लो के नीचे अगर जाता है, क्लोजिंग आता है, देन वापस वीक हो जाएगा क्रूड. तब तक तो एक्सपेक्टेशन तो है कि वीक होगा, बट अभी टर्न हो गया एकदम से. हाँ, अभी तो नहीं है, बट आज के लो के नीचे क्लोज आना चाहिए. हाँ, अगर वैसा आता है तो डेफिनेटली इट कैन कम डाउन अगेन. अच्छा, एक रिक्वेस्ट है. फैक्ट फाइंडर हैं, एक अच्छे स्पीकर हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी, शायद वो शेयर करना चाहते हैं. उनका आईडी भेजो ना मुझे. हाँ, रिक्वेस्ट भेजिए सर. I'll accept the request. Till that time, Dr. Ashu and Amit sir, वो बेसिकली जो G7 वगैरह में या EU में डिस्कस हो रहा है in terms of Russian oil, वो ये है कि they want to cap the price at which Russia can sell their oil, so that Russia को बहुत ज़्यादा profitability ना हो, because Russian oil as in crude is उसका जो cost है is one of the cheapest ones actually. So around $44-45 के आसपास उसका extraction cost आता है, and even if it is selling for say 75-80, what a lot of people are saying, still it is earning a decent profit in it. And what the West think is that is the reason Putin is able to maintain the war front. So what they want to do is they now agree that they can't stop the crude flowing, and it will be detrimental to the West itself. So, but they want to punish, saying that they want the price to be capped
for Russian crude. I don't know how or that will be done or not done, but that is what the talks in last 2 days have been for Russian crude as such. The capping probably might happen through UK based because most of the insurance companies or insurance companies are based in UK, so probably that might be the way. But really, they haven't declared what price capping and how they want to do this mechanism. Yeah, fact finder. जस्ट सनी, क्रूड पे कुछ बोलना चाहोगे? ये ट्रंकेटेड सी ले रहा है या एक्सटेंड होगा बोल रहे हैं, क्या लग रहा है सनी भाई, ट्रैक कर रहे हो? No, I'm not tracking in detail. Okay, sure. Okay, thanks. Fact finder, yes, you can do it. Hi. Just a few things on crude. One needs to keep in mind that obviously the recent rally in the last 4-5 days has been driven by a couple of factors. The first is the acknowledgement by Macron that there is a pretty much very limited capacity from the OPEC X of Russia. The second is, obviously this discussion about, trying to use the insurance companies. In my view, it can be fairly effective because there are two types of insurance that shipping companies take. One is the shipping insurance for the ship itself, and the second is third-party insurance. And third-party insurance is primarily done by UK and the US and Europe, which is about 95% of the insurance. So if you don't have third-party insurance, you cannot enter a port because essentially third-party insurance, ensures that in case there is some damage at the port, like what happened in the Suez Canal, at least there is some ability or if there is a leakage of crude oil into the sea along the coast, that can be taken care of. So it is going to be challenging also for Russia to supply this. At the same time, the question is that India is obviously taking advantage of this, and so is to some extent is China, but although not that much. My personal reading is that if you guys go back to the history of what US did with when the Uyghur Muslims are getting, there's genocide against them. What the US did is they said that even cotton grown in that region, if that cotton goes through, gets processed in another region, it doesn't matter because since the source of that cotton was in this particular region, and even if, say, shoelaces were manufactured in that region and went into shoes in some other region, they would still go and say that you will not be able to export those shoes to the US and European region. Why I'm trying to say this is because they will try and say that if there is crude oil that is being bought from Russia, and it's hard to find out what this crude oil is and where it finally gets supplied to, but the fact of the matter is that crude oil is entering a refinery. They will say that the supply of crude oil end products from that refinery to the end markets, that also will be sanctioned, just like they've done it for cotton. That's very possible. And so it may be a combination of insurance as well as this, and directly sanctioning the end product. So one needs to bear in mind. The other point I want to highlight is that while a lot of people look at the short term crude oil price, don't focus on that. Focus on the spread between the current month and the next 2 months, and that spread has narrowed, and essentially it means that there is a lot of tightness of supply in the market. And as we get into the winter season, that tightness would actually rise. As far as the Indian rupee is concerned, I heard a few people talking about reliance and foreigners and all of that stuff. Just consider this: that Indian rupee at 79
is obviously something that the government will not like, because it paints a very bad picture. Although fundamentally it makes sense for the rupee to continue to decline. And as the rupee declines, the RBI might say that, listen, I will not try and continually use my. So what the RBI has been doing, and why you're seeing this very sharp move in the rupee, is the RBI was essentially buying, selling rupees in the current and buying in the future. So they were selling their spread, and as a result, the spread compressed on the 12-month, which is one of the reasons why you saw this massive spike in the rupee. Now, as far as it appears to me that the RBI will give up on the rupee to some extent, but if they continue, if they give up the rupee, remember, at the end of the day, the rupee depreciates, the RBI makes money, and then the government of India gets a nice dividend. And there is a chance that if they try and fix the rupee, then the 10-year bond yield could spike up. Right, and that's something that people need to watch out for now, because you have a choice between the two. As far as Reliance is concerned, I don't want to have a view whether it's a buy or a sell, but I just want you all to think about this. If they have to do unlocking, and by the way, my view is that Google and Facebook and Microsoft never invested in Reliance because they wanted to make returns. They did not need to invest in Reliance at all. They already existed in India as very powerful entities and making a lot of money. They don't get any benefit out of investing in Reliance. The only benefit that they get out of investing in Reliance is protection from policy. And the reason why that happened is in 2019, the government of India dismantled 60 bilateral treaties with 60 different countries across the world, which protects foreign investment in India. So when you remove that protection of foreign investment, you have to then use somebody else to protect you, which is one of the reasons why Google, Amazon, and Google, Facebook, and Microsoft invested in Reliance. They are not interested in the returns. As far as just bear in mind that Reliance is making a lot of money from this crude oil, because or getting cheap Russian crude oil. The question is that if there are sanctions against, we might have a problem. Reliance might have a problem. The second important point you got to keep in mind is that if they have to unlock value in their retail business, and somebody had mentioned that he believes that Reliance will double, I'll be very surprised about that. The problem that I'll just like to interrupt here. We are deploying a policy of not giving a counter to your view. So you can give your view. Don't say in terms that he said this or that. Kindly continue, but please give your view. Somebody else has their own view. We appreciate all the views. That's all. And in terms of your accepting your request, the reason we were not accepting your request was that we usually ask everybody for their name or to introduce themselves. It's only because Dr. Ashu said that we took your request. So we would be grateful if you can give your introduction a bit, your name and other things, and then continue with your view. But kindly don't counter any others guy's view. We respect everybody's view. Cool. I understand that, Vijay. But I will not be able to give out what I do and who I am. Sorry about that. If you want me not to speak, then I will not speak. No, the problem is not that. Fact finder, brother. The problem is not that. We want you to speak. But since you know my name, even I want to know your name. You can put any name. You can say I'm Salman Khan. I won't mind it. Because I don't know whether you are Salman Khan or not. Absolutely speaking. मैं लोगों को वही चीज बोलता हूँ कि भाई कोई तो नाम बता दो. हम कैसे फैक्ट फाइंडर बोलोगे तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा. कोई तो घर वालों ने नाम रखा होगा ना.
तो नाम ही पूछा आपका, और आप क्या करते हो, आप सिंपल बोल सकते हो भाई मैं ट्रेडिंग करता हूँ, इन्वेस्टिंग करता हूँ। हम ये नहीं पूछ रहे किस कंपनी के लिए ट्रेडिंग करते हो, किसके लिए इन्वेस्टिंग करते हो, आपका बुक साइज क्या, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें सिर्फ एक आपका नाम जानने में कोई, शायद हमने कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं पूछा आपसे। If I have asked you a wrong question, please tell me that we have asked a wrong question. See, there are sometimes, right? I have been on discussions with even CNBC, but nobody's asked me to mention my name. Okay. So if you still don't want me to speak, I will cut out. Your choice. But I mean, I'm just saying, even a platform like CNBC doesn't force me. So we don't compare ourselves to CNBC. No, we are not. We just yes. So that's not the question, that they have not asked the question. So very sorry. Well, everybody has their own policies. But क्योंकि हमने if we could. Sorry. No. See, everybody. You can continue with the CNBC would have their own. Time if you CNBC would have their own policies. We would have our own policies. Right? Okay. Cool. On the lines, just keep in mind that the retail business was being valued at several times when compared to what the valuation of the Chinese companies were. But the problem is the Chinese companies' valuations have collapsed. And nobody can now justify the valuations of the retail business, nor can they justify the valuations of the telecom/digital business. Secondly, you got to keep in mind that if you look at most investors who would talk about the valuations of these two large businesses, keep in mind they're all valuing these businesses at $100 billion each. And for them to finally come out with an IPO, eventually they will have to sell at least 5%, and then eventually in 3 years, 25%. Think about $25 billion coming into the market. You think that from two different companies, you think it can be absorbed? I mean, I'm just saying LIC struggled to get even 1 times book, and now it's much below 1 times book. So just bear in mind that, what was the valuation that it was getting benchmark 1.5 years ago is not relevant anymore. The world has changed. So, and the other risk, of course, is potential sanctions. I don't know, but that is also another risk that one needs to keep in mind. As far as foreigners are concerned, I don't. There's a very interesting report by Katao Management. In the last 1.5 years, there's been a lot of money that has got into US equity funds. May was the first month in 19 months when flow started coming out. I'll try and share that chart where flow started reversing and started coming out. Sorry to interrupt again. If you have that data point, we'll absolutely love to have that chart or data, whatever you have. So it will put much more insight into the listeners altogether. If you can please tag me, and I'll retweet it. Don't worry about it. I will share it. Sure. 100%. But just for perspective, since January 2021, for every $100 of equity inflows that's happened since then, since Jan 2021, only $4 has been redeemed till now, as of May end. So just keep that in mind. That can that $4 become $10-12? Yes. The other issue is that as US becomes cheaper and cheaper in valuations, the case for emerging markets becomes lesser and lesser, and 85% of the money that is invested by foreigners in India is not dedicated to India.
It is dedicated to emerging markets. So if they believe emerging markets are not going to give returns because US is cheaper and more attractive, they will keep selling India. They have no reason to stop in selling India. Okay. And if you look at the latest data, somebody had highlighted by BISCOM on the consumer sales that have been happening in the month of April and May. It has been very bad in the consumer durable side. Despite the very hot summer, consumer durables have not sold as much as people have thought it would in terms of units. And then if you listen to the comment made by Unilever's chairman, he says that this is the worst ever situation we've ever experienced since history of the company. So I'm just saying that the data that will come out from the domestic side will progressively become slightly worse, at least from a consumption side. So if you put all of that together, I don't see how. And the last bit, if foreigners have to keep selling India, I think banks is what they will keep selling. But just the last point is just keep a watch on the tenure, because if the RBI focuses on the dollar, on the rupee, then the tenure could also, become crazy. So, okay, just to add to your point, probably you must be following DXY index. This Dolex 30 index. Dolex 30 means Sensex 30 denominated in dollar terms. Yeah, I have looked at it. I won't look at Sensex. I look at Nifty in dollar terms. No. Nifty in dollar terms is not available in any charts as of now, because what I know from my background from last 18 years is there was a time when Nifty was denominated in dollar terms, which was there, which you could have compared. Currently, there is only one data available, that is Dolex 30 index. Dolex 100 is a Dolex 200 index. So that Dolex 30 index tells me when we bottomed out in 2008 at 2250 Nifty levels. Essentially, I don't remember as such. So from there, Nifty went up to almost 7 times, from 2250 to 18,600. I'm talking about. Same time, Dolex index went up almost 9.5x. I have all the charts. I have all the data for that. Again, probably you might have joined late. I have the FII data, which says that FII net negative from last 16 years, if put together, till today's date, FII net negative. So it means that FII are shorting. But they are holding this market from 1991, when PV Narasimha Rao opened this government as when this license Raj was removed. So they have invested from that time. Nobody knows. I had word with so many people. Can we get this data from Bloomberg? They say, boss, this is not possible. We have even tried to extract data from so many sites possible. None was able to do it. And I've got so many friends who use Bloomberg's daily in and out. So, किसी के पास data नहीं. Still, FII after being net sale figure is there from last 16 years. Probably their net figure sales, including today's data, would be somewhere approximately I'm talking, would be approximately more than 50,000 crore rupees. That is what my Excel sheet is telling me. That data is available on NSE website also. That data is available on any website also. Same time, the domestic plus your client category, people have added 6.10 lakh crore rupees of money from 2006 to 2022 till today's date. When I was comparing the chart, because they have invested, say for example, at 2250, 3000, 4000, 5000, they have a right to book out their money. Because their money would have gone, for example, they have bought Reliance at 200, 300, or HDFC Bank, when I started my career, was trading at $50. I don't know how many dividend they would have given, how many, probably 1 or 2 times they would have given a bonus, if not mistaken. Infosys would have given a bonus, a right issue, or anything else. So they have sold only their profit part. So they are still in the Indian markets. Their top holding was almost around 21-22% for last 18 years. Publicly available data I'm talking about. So beyond that, even we don't वो जो हम चीज बात करते हैं ना, एफआई पक्का बेचेगा ही. उसका रीजन सिंपल एक ही है.
भैया उसको वापस जो प्रिंटिंग प्रेस से पैसा लिया था ना वो देना है। तो वो चीज तो मार्केट डिस्काउंट पहले से कर रहा है कि भाई 75 बेसिस भी होगा, 100 बेसिस पॉइंट और भी रेज होगा, तो उनको पैसा इंडिया से निकालना ही है। अगर पैसा निकालना ही है, मार्केट को गिरना ही है, क्रूड का प्राइस 110 115 है, ठीक है, तो मार्केट क्रैश क्यों नहीं हुआ? मार्केट क्रैश कहीं का भी नहीं हो रहा है, वो उसी रेंज में चला आ रहा है। और जब रशिया का वॉर चालू हुआ था तब भी वही था, आज भी वही है, 200-500 पॉइंट ऊपर नीचे करके किस्सा खत्म कर देता है। तो यहाँ कोई बहुत बड़ा कोई, क्योंकि जो नोन चीज है, अननोन में है ना, मार्केट रिएक्ट करता है। लाइक इट वाज 2020, लाइक इट वाज इन 2008। अननोन में मार्केट रिएक्ट करता है, नोन अननोन में मार्केट रिएक्ट नहीं करता। एक चीज नोन है, एक चीज अननोन है, तो जो चीज नोन है उसको मार्केट पहले फैक्टर इन कर लेता है। कॉज आई फॉलो डाउ थ्योरी. डाउ थ्योरी वाज रिटन ऑलमोस्ट 130 years back by Charles Dow itself. Yeah, please go ahead. Amit, I have done an analysis. I haven't shared it in the past, but in India, I can manipulate the entire market with only $1.5 billion. I can make it go Yes, whatever I direction you want. Yes, I agree with you. I totally agree with you. I totally agree with you. I don't have any argument with that. Yeah. So the reason why I'm saying this is because don't look at it from a point of view and saying what you're saying is, see, the market is aware of all the negatives, and so what more negative can come. I agree with your point of view. But however, it's not about, I don't think the foreigners are selling because of incremental negatives. It is a choice between, if you go to a shop, I have a choice. I buy something with more value or something with less value, right? Foreigners come to India or other emerging markets when they don't see value in their own markets, right? When they see value in their own markets, they will sell other markets and come back to their home market. So even though you might not see any incremental, and I do agree there is a chance that this war gets over, it has to, but the restrictions on the war is not going to change at all. So you might have a nice in short-term rally, and then eventually reality once again comes back. But having said that, there is no reason why emerging markets will continue to see outflows, especially India, because India has done very well in the context of other markets, and it cannot justify, given same ROEs as other emerging markets, it cannot justify the valuations. Back in 2008, India's ROE was double that of emerging markets. So people could justify the valuation. Today, there is no difference. So nobody can justify. I have a couple of questions, if I may ask. So you're saying that in 2008, India was better placed as an economy as compared to what we are in 2022. That's my first question. Second question is, if there is a global fund that has an allocation to emerging market equities, you're telling me that they would not invest in emerging markets, divert that allocation and not diversify and invest everything in US and concentrate totally on US, and they would slash India until and unless US becomes overvalued. Is it that the case? So look at I look at data, right, and I look at actions rather than either. Okay, so let me No, just. but then these were the points. I'll tell you. I'll explain to you. Selling was an action point. No, so right. So let me explain to you. See, in 2008, the ROEs of the economy were far greater, while in 2000 today, the ROEs of India. Do we have any data on that? Yeah, there is. Yes, there is data. It's publicly available data. Can you please I don't. I want it is available. I don't have it right now with me, but then we would need data. I mean, I can also say that 2022 ROEs is better placed than 2008. Flavio, okay. I mean, let me just tell you that
You have to trust me on this. I'm not going to bullshit. So that is the thing. I mean, there would be 10 people who can come and say that, okay, fine, this is the data point, and there is this, and there is the thing is that the space is for a limited amount of time, and we would need to cover it. Have you cool down? Fact finder brother, if you can just even share on which website we can see that data, so that would be also beneficial. We'll then search around on which website to find the data. Okay, Amit, this data is available typically typically available from Bloomberg. I mean, you have access to Bloomberg? Yeah, I'll don't worry about that. If you give the ROEs, like what was the ROE in 2008 and 2022? If you're giving me, like, okay, fine, I'll find the data on Bloomberg. What was it? Yeah, so look at 2007, 2008, okay? What was the ROE in 2008? India ROE in 2008? I think India's ROE in 2007, 2008 was about 23%. Okay, and today it's about 14 to 15%. Okay. So it's come down substantially. Earlier, India's ROE was, emerging. See, if you go, okay, let me give explain to you. Let me give you a very easy way to explain this to you. In 2007, 2008, the high ROE companies of China did not exist. The high ROE companies of Taiwan did not exist. When I speak about Taiwan, I speak about TSMC. TSMC's market cap or weight in the index is 6.5%. India's entire weight in the index is only 12%. That one company in Taiwan makes an ROE which is higher than Infosys, Wipro, TCS, all of them put together. Okay, it is making an ROE which is almost double. Those companies didn't exist back then. They were very small. Okay, just think about chips back in 2007-8. Similarly, companies like Alibaba, Tencent, JD, these companies barely existed. They are huge cash generating companies and huge ROE companies. So what happened is these companies got created and their ROEs are very high. And so the ROE gap between India's ROE went down because tech companies' ROEs went down. Indian IT companies, their ROEs went down. Banking sector ROEs went down. At the same time, ROEs of emerging market companies went up. I hope that explains your point. Fact finder brother, probably you won't tell your name, so I won't even ask your name. If you want to have privacy, we'll give you all privacy. No issues with that. So, two things there. Only two things. I have asked you for one data point. If you have that data, just tag me. Even I'll get and find it out. And the second was Bloomberg part. I'll get the data, say probably next 3 to 4 days, and I'll publish it on public forum. The second question on allocation of equities, would America, that there is something called MSCI index, and there are certain local funds also which have their own kind of investments in getting places. Say Dubai will have some kind of their own funds, UK will have their own kind of funds. Nifty, Indy is got, मतलब मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है इंडी होता भी क्या है. तो इंडी इज लिस्टेड ऑन NYSE, मतलब अमेरिका मार्केट में लिस्टेड है. तो उसको देख के जो ETF का पैसा है वहां पे, वो पैसा आता है जाता है, रोज का आता जाता है. इंडी का चार्ट आपको इन्वेस्टिंग में मिल जाएगा, ट्रेडिंग में भी मिल जाएगा. ठीक है, मुझे नहीं पता कितने लोग ट्रैक भी करते रहेंगे, हम तो बहुत कुछ ट्रैक करते हैं. तो मैं कल वो इंडी का भी डेटा बता दूंगा, डॉलर 30 का भी चार्ट बता दूंगा, डॉलर 100 का भी बता दूंगा, डॉलर 300 का भी, डॉलर 200 का भी बता दूंगा. So basically वही मैं चार्ट देख रहा था इमर्जिंग मार्केट्स का, and means I'm not a data guy, my data is my chart. So अगर मैं इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ तो मुझे EM, हाँ वही EM का चार्ट देख रहा हूँ. I mean, since he was talking about US will, FIs will invest in
US rather than EM. So I believe in charts. Chart is my data. So I'm seeing the breakout, multi-year breakout in emerging market in the index, that is EEM. You can see it on TradingView, and it is retesting. Obviously, it is retesting right now, retesting the breakout. But when we have a multi-year breakout on any chart, uh, we believe that it is going to be, I mean, it is going to stay for a while. It is going to run for a very good amount of years. Same if I see with Dolex 30 after 2008, for the first time Dolex 30 broke above 2008 high in 2020. 47 So level, 47 same. और 46 level. वो भी अब मेरे सामने चार्ट नहीं है, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले देख रहा था मैं, अभी नहीं है. चल ठीक So I है. mean both EM chart and Dolex 30 chart. Means for the first time it has broken above 2008 highs. In 2020 में breakout आया है और अभी उसका retracement आ रहा है. So from chart point of view, EM and Dolex 30 both are looking like long term bullish. So I mean वो मेरा एक थोड़ा counter argument. Can I just suggest one Yeah, thing? Interrupting. Just don't. I would highly recommend not looking at emerging markets just in the context of the index. I would suggest look at emerging markets in the context of US versus emerging markets, and see basically take the US S&P divided by EM, and then see if there's a breakout. Because this breakout. Ratio chart you means to say. Sorry? Ratio chart you means to say. Yes. Take Okay, I'll do that. Okay, because that there has been this view of buy emerging markets for the last 12 years, and every year it has underperformed eventually, and people have lost money. And there is a fundamental reason behind it. It is a discussion that will take me half an hour. I will not discuss it here. But there is a fundamental reason why those markets will, at least the US will be. It's the most innovative market in the world. We have to admit it. Last question is, I think Favilo asked me about foreigners and India, and just bear in mind, Favilo, while India clearly is good market because of our large population. The thing is that since 2000, back in 2007, 8, 9, the proportion of India dedicated foreign money out of the total foreign money invested in India, that proportion used to be 30%. I think it peaked at 2007 at 30%. That money has reduced down to 15%. So while, and this has happened right through to 2011, 12, 13, 14, 15, 16, all the way. So India's, So I would actually need data point. I'm sorry, I'm asking for data points again. Fabilo, you know what? The kind of data I think we are deviating from the topic too much. We can go back to now because it's already 12:30. First thing, second thing, the major investment is ETF investment worldwide by the investment funds, and they track not the relative strength as such. They track the the indexes themselves, the emerging market and others. If you have any question, and then we can move on. Let's time in one thing. Ranvijay, one suggestion. Fact finder brother, if one day we can have a session with you, देखो रोस्ट नहीं करने वाले हम सिर्फ फैक्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि आप फैक्ट फाइंडर हो ना. हम भी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, जो हमारे पास डेटा है हम उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं, या हमारे डेटा का रिडंडेंसी है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं. हम हमेशा इम्प्रूव करना चाहते हैं. दैट्स द पार्ट फ्रॉम अस. इफ वन डे वी कैन कॉल यू एज अ स्पीकर, देखो हमें ना या
तो मैं ये देखो अभी क्या है, रात के 12:30 बजे इतना डेटा की बात करेंगे ना, पब्लिक को समझ में भी नहीं आएगा, एंड दैट वुड नॉट बी फेयर ऑन आवर पार्ट टू आवर ऑडियंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज दिस विल बाउंस ऑन देयर हेड। तो बाउंसर क्यों मारने का, अपन 4 ही लोग पर्सन में बात कर लेंगे, पब्लिक का क्यों टाइम खराब करे। सो वन फाइन डे, Okay, so one very important thing I want to just tell you on a particular stock. Okay, the INR, right, is a problem for India. So my view is that the last time the government tried to help the INR, they attacked gold imports. They were introduced restrictions on gold. So you can guess who's going to get affected. fair point. So one fine day we'll call a fact finder brother. Okay, we don't want to know your name. If you are not comfortable, we won't even ask your name. But when we ask you a question, come with data and tell us what data we need to see also. तो हम भी तो इम्प्रूव होंगे ना। देखो जो कम्युनिटी अपना अच्छा बनता है ना, तो उस कम्युनिटी में सबको आप इम्प्रूव करके जाओ ना, हम भी इम्प्रूव हो जाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि यार देखो हम फ्री में ही कर रहे हैं ना, किसी से पैसा लेके तो कुछ कर नहीं रहे। तो probably fact finder brother, you agree with my thought process or not? Amit, I agree with your thought process. There are, explain offline. Pardon? See, I agree with your thought process, but okay, let me put it this way. Amit, I have 20 years experience in the institutional side. Okay, that kind of experience, it's I can't give you reports and say this report. I can blurt out all the reports that I'm referring to, which broking house and what, but you will not get access to that, right? Fair point. No issues. You just give us an idea what kind of data we need to see on even Bloomberg or any other apps. I have the resources, or anyone of us will have the resources. We'll find it out from ourselves. You just need to pinpoint this is the data that you need to see. Then it's our job. If you can't find, then it's not your mistake. I think we have. Okay, he's there in listeners now. Okay, Ayush, you have raised your hand. You want to say something right now? No, I had a point for the fact finder only. It's just that he's no longer here. आयुष पीछे बहुत नॉइज आ रहा है। आयुष पीछे बहुत नॉइज है। Sure, 1 minute. हाँ जयेश भाई बोलो ना। Am I audible now? Yeah, proper. No, I had a question on fact finder only. Basically, अभी नहीं है। सुन आयुष I'm not trying to ask him, but just wanted to clarify one point on a note that he said that since 2007, they were buy on dips. Emerging markets were always buy on dips. So there was a flag raised in the month of August 2021, wherein a very big analyst in US had said that emerging markets, including India, is a sell because we are at par and we are in profits after a very long time. Is why the trigger happened in the month of September, October in India also. So that was one point that I wanted to just clarify out here. That's all. Fair enough, Ayush. जयेश भाई कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई व्यू? सर एक जो फैक्ट फाइंडर सर ने क्रूड के बारे में जो बोला ना, अभी वो नहीं है, अभी वो नहीं है, तो उनके बारे में अगर वो होते तो आप पूछ सकते थे। है वो चीज तो आपका कोई व्यू तो आप अपना व्यू बता दो। हाँ ठीक है। तो उन्होंने मतलब कि क्रूड को ओरिजिन ऑफ सर्टिफिकेट से पूरा नहीं रोक पाएगा। जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है उसको पता है कि सर्टिफिकेट जो ऑफ ओरिजिन किस तरह से इशू होता है, तो उससे प्रोडक्ट का सेल नहीं रुक सकता। अगर कहीं भी उस प्रोडक्ट की मांग है तो वहां तक वो प्रोडक्ट पहुंच ही जाता है। बस यही बोलना था। और
अगर उनको रोकना है ना किसी भी तरीके से, तो वो इनवॉइसिंग से रोक सकते हैं। इनवॉइसिंग से कैसे रोक सकते हैं? इनवॉइसिंग के ऊपर वेट रहता है या उसका प्रोडक्ट का जो भी है, जैसे लीटर्स है या फिर वो जिसमें भी जाता है उसका मेजरमेंट, उससे वो लोग रोक सकते हैं कि इस मेजरमेंट से इतने वैल्यू के ऊपर हम लोग इसका पेमेंट जाने नहीं देंगे या एक्सेप्ट नहीं करेंगे या रूटिंग नहीं करेंगे। उस तरह से वो रोक सकते हैं। एक तरीका ये है, बस वही बोल रहा हूँ। Jayesh bhai, just to add on your crude part, that is there, and the last week or 10 days जो major issues क्रूड के साथ हुए हैं उसमें एक पार्ट लीबिया का भी रोल है, बिकॉज सी everybody is asking all the OPEC plus countries to increase their supply. Libya itself is not able to maintain its supply levels. Lebanon maintained the supply levels asked out of it. There has been days when it has been 85% less, or majority agar on an average 50% less than what their quota of supplies is. So that is also putting a pressure on crude. Anyway, अमित सर, आपके रिमार्क्स वगैरह करके फिर आई थिंक इट्स टाइम टू कंक्लूड। किसी को क्वेश्चन है तो मुझे भेज दो। 12:40 तक क्वेश्चन नहीं आया तो मैं वाइंड अप कर दूंगा। सिंपल है, यही है, आई डोंट ट्रैक के डाउट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सिंपल है, 15,700 ब्रेक नहीं होता है, 10-15 पॉइंट्स ऊपर नीचे पकड़ लो, मैं कर जाऊंगा सुबह लॉन्ग। एंड टू पुट अ डिस्क्लेमर, मैं ऑलरेडी रेशियो स्प्रेड में बैठा हूँ। 15 का कॉल मेरे पास है, 16,000 में कॉल बेच के बैठा हूँ, तो मेरा लॉस 40 पॉइंट का फिक्स है। उसमें 40 पॉइंट से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होगा, मतलब 40 पॉइंट्स का लॉस मेरा फिक्स है। मैं उसमें कुछ और भी कर सकता हूँ कि मेरा लॉस और रिड्यूस कर दूंगा, मेरे फेवर में नहीं चला तो। दैट्स वन पार्ट। बैंक निफ्टी सेम चीज, 33,500 एक पकड़ लो, 33,300 नीचे के लेवल पकड़ लो। और मेरा जो आज भी था सिंपल है, 33,000 34,000, इसमें कहीं ना कहीं मार्केट बीच में रहेगा। 34,100 200 ब्रेक करता है तो 34,400 फर्स्ट ट्रैक करेगा, क्योंकि वो गैप लेवल है। अगर वो गैप लेवल फिल कर देगा तो जो हर्ष बोलता है वो प्रॉपर है कि यहाँ से फिर जो रैली मारेगा ना, वो अलग लेवल की रैली आ जाएगी। जैसे वो रैली समझ में आएगी ना, मैं नहीं तो हर्ष ना कोई अपडेट कर देगा ट्विटर पे, मैं खुद अपडेट कर दूंगा कि भैया वो रैली ने ब्रेकआउट दे दिया है या ब्रेक डाउन दे दिया है। जब तक वो लेवल ट्रिगर ही नहीं होगा तो अननेसेसरी 50-100 पॉइंट के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी मैं पूरा दिन देख के परेशान हूँ कि मेरा पैसा नहीं बना। बुलिश में जो स्टॉक दिखता है, मैं सिंपल बोलता हूँ, रिलायंस 2445 मुझे दिखता है, राउंड फिगर 2450 पकड़ लो। कल के मार्केट कंडीशन से 2450 ब्रेक करता है तो आपको नीचे का स्टॉप लॉस 2315 या 2320 का, सॉरी 2550 अगर ब्रेक करता है तो आपको नीचे का स्टॉप लॉस होगा 2520 2515 मैक्स। इसके ऊपर चला तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है। एलएनटी में एक बड़ा ब्रेकआउट आया है, एलएनटी परफॉर्म कर सकता है। ब्रेकडाउन किस स्टॉक में दिख रहा है? प्रॉब्ली कोटक, प्रॉब्ली एशियन पेंट्स, प्रॉब्ली टाइटन। ये 3 स्टॉक बहुत खराब दिख रहे हैं। अगर मार्केट गिरेगा ना तो जो वीक स्टॉक है उनको मारने का सोचना, जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है मत सोचना। बैंकिंग ऑफिस एसबीआई इज लुकिंग वेरी गुड, 461 के ऊपर सस्टेन करता है तो सिंपल आपको स्टॉप लॉस रखना है 458 के नीचे का या 457 रख लेना। 1 रुपया ज्यादा भी जाएगा वो फर्क नहीं पड़ता पर चला, क्योंकि ये क्या बोलते हैं एक्सपायरी का वीक है, दिस इज गोइंग टू एक्सपायरी वीक, तो एक्सपायरी वीक में कुछ भी हो सकता है। 2 दिन बचे। अब जो डेटा बोल रहा है दोनों तरफ का, 15,500 to 16,000 के बीच मुझे भी एक्सपायरी दिख रहा है, इससे ज्यादा मुझे नहीं एक्सपायरी दिख रहा। जहां पे इसने रेंज ब्रेक कर दिया, मतलब कोई ना कोई सेक्टर उसको बचाने के लिए आएगा। बचाने के लिए कौन सा सेक्टर आ सकता है? सबसे बड़ा है मोटा भाई, मतलब रिलायंस। सेकंड इज आईटी, ऑटो ऑलमोस्ट एग्जॉशन जोन पर है, हमारे सारे टारगेट हिट हो गए। तो मैं जब स्पेस स्टार्ट किया था तब भी बोला था आई एम नॉट लुकिंग इनटू ऑटोज एनीमोर फॉर बुलिश पर्सपेक्टिव और इवन बाइंग पर्सपेक्टिव। हम जब नीचे से बोल रहे थे, आज हमने भी अपना पोजीशन ऊपर काटा है, ठीक है, क्योंकि जो लेवल दिए थे सब लेवल हिट हो गए। वहां हमें नहीं दिखता कि हमें बाई करना चाहिए, तो हमारा आज कोई व्यू नहीं उसके लिए। शॉर्ट नहीं करना है, मतलब एग्जॉस्ट हो गया ये मतलब नहीं कि जाके शॉर्ट कर दिया, वो यहाँ से भी भाग सकता है।
बट अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, मेरा जो बनना था मेरा बन गया। तो ऑटो सेक्टर में अभी मेरा कोई व्यू नहीं। एफएमसीजी में लीवर चल सकता है, लीवर से ज्यादा अच्छा जो लग रहा है आईटीसी पकड़ोगे ना विद स्टॉप लॉस, बड़ा स्टॉप लॉस दूंगा, क्वांटिटी कम रखना। आईटीसी अगर फर्स्ट एंट्री लेते हो, अभी जून कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड मत करना, जुलाई के कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करना। अगर आईटीसी लेते भी हो थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि जुलाई के अगर ऑप्शंस भी खरीदोगे कॉल साइड में तो उसका 257 से 255 का नीचे का स्टॉप लॉस है, जिस दिन वो ट्रिगर हो जाएगा पोजीशन एग्जिट कर जाना। बट व्हाट आई सी इन आईटीसी इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट, प्रोबब्ली इट कैन हेड टुवर्ड्स 300 लेवल्स। लीवर में भी उतना नहीं आ रहा है क्योंकि आज भी उसने बहुत अच्छा कैंडल नहीं बनाया। एचडीएफसी बैंक ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है, आईसीआईसी बैंक ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है। कोटक वीक दिखता है। स्टॉक दिखने में जो अच्छा दिख रहा है एक्सिस बैंक ऑन द अपसाइड, इफ इट ब्रेक्स अबाउट 645 650 लेवल्स, वेरी गुड ऑन द अपसाइड। सेम स्टॉप लॉस आपका 10 to 15 बक्स रहेगा नीचे का, और ऊपर में 680 देख सकता है। अब वो कल आएगा, परसों आएगा, 2 दिन बाद आएगा, मुझे नहीं पता। जब भी आएगा मैं स्टॉप लॉस भी अपडेट कर दूंगा अगली बार स्पेस में, टारगेट भी आएगा वो भी अपडेट कर दूंगा। इंडसइंड में थोड़ा बहुत दिखता है पर इंडसइंड का वेटेज ही नहीं है। बात हो गई बैंकिंग की। एचडीएफसी में कुछ नहीं दिख रहा है, एचडीएफसी एज सच। बजाज फिंसर्व शॉर्ट दिखता है। बजाज फिंसर्व अगर नीचे गिर जाए प्रॉब्ली 11,250 11,260 प्रीवियस लो था, वो ब्रेक कर जाता है तो 700 to 800 पॉइंट का फॉल उसमें आ सकता है आपके लिए। आपको स्टॉप लॉस क्या रखना पड़ेगा? 300 से 400 पॉइंट ऊपर, मतलब 11,500 11,600 का स्टॉप लॉस रख के आना पड़ेगा। तो काउंटर बड़ा होता है ना, तो आपको स्टॉप लॉस को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी। बजाज फाइनेंस में कुछ नहीं दिख रहा था मुझे। टीसीएस इन्फोसिस मैंने आपको बता दिया, टीसीएस में आज कुछ आया नहीं ऐसा। टेक महिंद्रा फिर ठीक था, बट सामने ये अपना कौन सा है दूसरा, उसमें कुछ दिख नहीं रहा। एक टेक महिंद्रा और दूसरा कौन सा स्टॉक होता है, इतने स्टॉक होते हैं ना, मैं 40 स्टॉक ट्रैक करता हूं, तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा ऐसा। तो टेक महिंद्रा अच्छा है। और बचा ऑटो गया, टाटा स्टील अगर 785 के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो वहां से ना एटलीस्ट 50 to 100 पॉइंट्स का मूव दे सकता है, एटलीस्ट दे सकता है। कल देगा, परसों देगा या हफ्ते में देगा, मुझे नहीं पता। उसके लिए आपको स्टॉप लॉस 750 के नीचे रख के जाना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड इट्स ऑलमोस्ट 1 o'clock. Probably any comments from anyone? If no, then I won't take any request at 12:45. गुरप्रीत प्राजी की लास्ट ले लेता हूँ एक रिक्वेस्ट, उसके बाद स्पेस एंड कर देंगे। या प्राजी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, बोलिए। रणवीर जी आवाज आ रही है उनकी? या आपकी आवाज आ रही है। गुरप्रीत पाजी बोलिए। नहीं, उनकी नहीं आ रही। हेलो। हाँ प्राजी बोलिए। हाँ, सिर्फ 5 मिनट लूंगा। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी बोला, मुझे थोड़ा सा बोलने में ना दिक्कत होती है, तो मेरा दिमाग ज्यादा काम करता है, मुंह मेरा कम काम करता है। तो मैं थोड़ा सा 2 जनों को कोट करना चाहूंगा। एक मिस्टर सनी को, एक्चुअली उन्होंने एग्जैक्टली जो मेरी पढ़ाई है ना, सेम, मैं तो बहुत देसी सी पढ़ाई की है मैंने, बट एग्जैक्टली उन्होंने मेरे वर्ड्स, यानी कि मेरी तरफ से उन्होंने बोल दिए, थैंक्स फॉर माय वर्ड्स टू मिस्टर सनी। तो एक तो मैं वो फैक्ट रखना चाहूंगा, और दूसरे नंबर पे मैं एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का व्यू देना चाहूंगा, जो कि सारों के लिए थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये बहुत कॉशियस टाइम है और ये मेक और ब्रेक टाइम है ऑलमोस्ट। तो मैं उसको कुछ डाटे शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली 2014 से जो ये बुल रन स्टार्ट हुआ है, तो उसका कोई मीनिंगफुल करेक्शन अभी तक आया नहीं है, एक्सेप्ट अगर आप 2020 को छोड़ दीजिए, और वो भी एक तरह से फ्लैश क्रैश था, और उसको मैं कंसिडर नहीं करूंगा कि वही करेक्शन थी या कुछ था। ठीक है, अगर उसको छोड़ दिया जाए तो जो पुरानी थ्योरीज चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम टाइम को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 8 से 10 साल में करेक्शन आती है, तो हम ऑलमोस्ट 2008 की करेक्शन के बाद हमने कोई जेन्युइन करेक्शन दिखी नहीं है।
वो ऑलमोस्ट आप ये लगा लीजिए 14 ईयर्स हो गए, ऑलमोस्ट 4 से 5 साल एक्स्ट्रा हो चुके हैं उसके लिए। ठीक है, मैं सेंसेशन नहीं क्रिएट करना चाह रहा हूँ, बट उसके लिए मैं 2 या 3 सॉलिड पॉइंट्स दूंगा कि ये किस वजह से मार्केट रुकी हुई है। मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बट मैं कहना चाह रहा था कि जो मैं सीखा हूँ आज तक, अगर मैं शेयर कर दूं, अगर किसी का बेनिफिट हो जाए, क्योंकि मैं तो बहुत कॉशियसली ट्रेड कर रहा हूँ, मैं बुलिश साइड भी हूँ और बेयरिश साइड भी हूँ, और बड़ा कॉशियसली ट्रेड कर रहा हूँ इस लेवल पे। एम आई ऑडिबल? हाँ जी आप हैं। हाँ, तो 2018 में आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमारे इंडियन मार्केट में वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुई थी। 2018 में जब वीकली एक्सपायरी इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उसके बाद से मार्केट आपने देखा होगा कि रिलेंटलेसली अपसाइड का ही ट्रेंड पकड़ा हुआ था मार्केट ने, यानी कि टेक्निकल को डाउन साइड पे टेक्निकल को ब्रीच ही नहीं, यानी कि इवन वो टच भी नहीं कर पा रही थी। जो एक फंडामेंटल्स बोलते हैं, जो अपना थ्योरी बोलती है कि एक बार आपको नीचे का लेवल टच करना जरूरी है, कंसोलिडेट करना जरूरी है, तो वो 2018 के बाद उसने कहीं पे भी उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, और उसके बाद 2020 में जो एडवर्सरी आई पूरे वर्ल्ड वाइड, तो वो उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाई, यानी कि वो सिस्टम, जिस सिस्टम से इन्होंने मार्केट को बचाया था, उसी सिस्टम ने मार्केट को क्रैश कर दिया। जो वीकली एक्सपायरी थी, जो मैंने खुद स्टडी की है, और आप देखिए उस टाइम पे कॉल और पुट्स के रेट्स ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का प्रीमियम था, 800 पॉइंट का प्रीमियम था, ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ कि, यानी किसी को समझ नहीं आ रहा था, शॉर्टर को समझ नहीं आ रहा था, बायर को समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। ठीक है ना, तो वो एक बड़ा पॉइंट था। तो वही पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूं कि जो इस टाइम पे मार्केट बड़ा ग्रेजुअली नीचे जा रही है, तो जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने इस चीज की नेगेटिविटी को पढ़ लिया और वो बड़ा कॉशियसली मार्केट को मैनेज कर रहे हैं, जहां तक मैं रीड कर पा रहा हूँ इस चीज को। तो यहाँ पर जो ये लेवल, जो सनी सर ने जो लेवल बताए हैं, तो वो बड़ा कॉशियस लेवल्स हैं, वहां पर आपको ध्यान रखना है उस लेवल पे। वो लेवल कोई इजीली, यानी कि उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाले लेवल है वो, बट ये है कि अपसाइड पे 16,200 के ऊपर क्लोजिंग बहुत जरूरी है। बट मार्केट एकदम नहीं गिरेगी, गिरेगी ग्रेजुअली, बट उसके बाद डाउन साइड हो जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली, मैं वैसे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहता, बट 18,600 पीक हो जाएगा अगर 16,200 के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं जाती है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, इतने, यानी कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत छोटा है, यानी कि मैं बहुत छोटे लेवल का ट्रेडर हूँ, मेरी कैपिटल आप लोगों की यानी कि 0.1% भी नहीं होगी। ठीक है ना, बट उसके बावजूद मैं इतने बड़े वर्ड्स यूज कर रहा हूँ कि अगर 16,200 के नीचे क्लोजिंग हो जाती है इस एक्सपायरी की, तो 18,600 एक तरह से माउंट एवरेस्ट बन जाएगा। बस मुझे यही बोलना था। थैंक यू। चलो, I'll add to that fact. सिंपल 20 डेज का मूविंग एवरेज पकड़ोगे, मैंने बहुत पहले भी एक चार्ट डाला था, प्रॉब्ली इसी जून मंथ में चार्ट डाला था। 20 मंथ के मूविंग एवरेज के नीचे जनरली क्लोजिंग नहीं आता है। मंथली की बात कर रहा हूँ मैं, वो फैक्ट है। ठीक है, मैं कुछ भी बोल दूं, मैं बकवास करता हूँ, ये पकड़ लो। जो चार्ट बोलता है वो लास्ट में जो प्राइस ने जहां पे क्या एक्शन दिया, क्या नहीं दिया। मेरे पास निफ्टी का जो डेटा अवेलेबल है उसमें मैंने चार्ट प्लॉट किया, मेरे पास जो सेंसेक्स डेटा है उस पर मैंने चार्ट प्लॉट करता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मैं सबसे बड़ा झूठा, पकड़ लो। बट जो चार्ट बोलेगा, चार्ट से बड़ा तो मैं भी नहीं। वो इंसिडेंट कितनी बार हुए, किस टाइम पर हुए? उस टाइम पर हुए 1978 का मार्केट, जब लिक्विड ही नहीं था, कोई था ही नहीं, आपस में उल्टे बदले चलते थे, सीधे बदले चलते थे। शायद आप लोगों को तो वर्ड भी नहीं पता होगा, आपने स्कैम मूवी देख के वर्ड सुने होंगे। तो वो चीज नहीं है। जब मार्केट में लिक्विडिटी आनी शुरू हुई, जब ऑप्शंस चालू हुए, तब लिक्विडिटी आनी शुरू हुई। लिक्विडिटी भी ऑप्शंस में तब नहीं आई जब हम 2006, 7, 8 में ऑप्शंस भी ट्रेड करते तो कोई लिक्विडिटी नहीं होती थी। मैं ये 500 बार बात बोल चुका हूँ मेरी स्पेस में, भैया हमने तो वो भी मार्केट ट्रेड किया, आईसीआईसी बैंक की लिक्विडिटी पूरी मेरे पास ही थी। तो मेरे पास 5 लॉट खड़े हैं, 5 ही लॉट मेरे, बाकी कोई है ही नहीं उसमें। तो मेरे पास पूरी लिक्विडिटी हो, इसका मतलब नहीं कि मैं बाजार का किंग हो गया। कोई बेचने वाला नहीं, मैं अकेला खरीदार था।
तो मेरे हिसाब से भाव चलेगा। वो भी लास्ट में मेरे भाव नहीं लेके जाओ, जो मर्जी है उसका वो एग्जिस्ट करना पड़ता है। तो जब लिक्विडिटी आती है ना मार्केट में, तो दैट इज एक्चुअल पॉइंट टू सी द डेटा। हम कुछ भी डेटा पकड़ लेंगे ना पुराना, उसमें लिक्विडिटी कितना था, कितना एक्चुअल वॉल्यूम्स होते थे, कितना एक्चुअल ट्रेड होता था। अब ये ऑनलाइन सब कुछ हो गया। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इफ यू वांट टू स्टडी सम डेटा, गो बैक टू द हिस्ट्री, फॉरगेट इंडियन मार्केट्स। मेरा सारा जो मैंने पढ़ के आया हूँ ना, मैं डाउ जोन्स से पढ़ के आया हूँ। आई हैव रेड डाउ जोन्स हिस्ट्री फॉर लास्ट 140 ईयर्स। मैं आज भी डाउ पढ़ता हूँ। मैं डाउ को रोज ट्रैक नहीं करता आपके जैसे, डाउ आज ये हो गया, आज वो हो गया। मेरे डाउ की हिस्ट्री है ना, कब कोई साल भी उठा के पूछोगे ना, मैं सब बता दूंगा इस साल में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। फिर मैं कई साल लगाए वो स्टडी करने में कि भैया मार्केट कैसे चलता है, मार्केट का साइकिल कैसे चलता है, उस टाइम पे क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। वो इसी निकाल के बैठे, पढ़ा उसको बैठ के। ऐसे आराम से पैसा नहीं बनता भाई बाजार में। आज कुछ पैसा कमाते भी नहीं तो उसी पीछे बनता है कि वो मगजमारी करके इतनी आते, स्टडीज करके आते। हमारे टाइम तो ना कोई स्पेस होती थी, ना कोई ऐसी वेबिनार होता था, ना कोई वर्कशॉप होती थी, ना कोई हमें सिखा सके ऐसा होता था। किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। सो कटिंग दैट ऑल टू द शॉर्ट पॉइंट ऑफ इट, स्टार्ट लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ द मार्केट। जहां आपके पास सबसे बड़ा डेटा पड़ा है, सबसे बड़ा डेटा है डाउ जोन्स में। डाउ जोन्स की ईयरली चार्ट मिल जाएंगे आपको, ईयरली मिले तो मंथली मिलेगा। आपको investing.com दे देगा। आप जाके चेक करो 1929 में क्या होता, आप जाके चेक करो 1909 में क्या होता, आप जाके चेक करो 1941 में क्या हुआ था, 1933 या 34 में जब वर्ल्ड वॉर चालू होना था उससे पहले क्या हुआ था। ये तो पढ़ के आओ क्या हुआ था, नहीं क्या हुआ था। आपको पढ़ना नहीं है, आपको सब कुछ फ्री में, सब कुछ सबको फ्री में कुछ नहीं मिलता भाई, मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है, तब मार्केट में पैसा बनता है। सिंपल एज दैट। और कल से मैं रूल्स बना दूंगा स्पेस में, उन्हीं को परमिशन मिलेगी जो रूल्स फॉलो करेंगे। बाकी कोई भी आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, वी विल नॉट एक्सेप्ट। एज सिंपल एज दैट। Those will be strict rule even for me, even for Ranvijay, even for Fabio, even for any one of us. वो कल से रूल आ जाएंगे, कोई भी आ जाएगा। कोई बोलेगा ना इसको बुलाने का उसका ना भाई, कोई अपना नाम नहीं बता सकता, कोई अपना आइडेंटिटी नहीं बता सकता, तो भैया घर पे रहो ना, अपना स्पेस खुद चालू कर दो। मैं यहाँ किसी को एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठा हूँ। एज सिंपल एज दैट। 2-4 बार इंसिडेंट हो गए, अगली बार किसी ने ऐसा इंसिडेंट किया मैं सिंपल किक आउट कर दूंगा। मेरा दोस्त रहे दुश्मन रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो टुमारो आई डिक्लेयर दैट, या 1-2 दिन में हो जाएगा, हम पूरा गाइडलाइन बना लेंगे, फिर देखते हैं ना स्पेस कैसे नहीं चलता। प्रॉपर बात करेंगे, रोज बात करेंगे, हमेशा बात करेंगे और अच्छी बात करके आएंगे। कल क्या हो सकता है, परसों क्या हो सकता है, उसकी बात करेंगे। आज से 5 महीने बाद क्या होगा, 2 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। यार मुझे मेरा तो अगले 2 घंटे में मेरी बीवी झगड़ा करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता, तो मैं कहा 2 साल की बात करने जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे किसको पता पुतिन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। पुतिन कौन सा अपना दोस्त है कि मुझे फोन करके बोलेगा अमित मैंने वॉर बंद कर दिया तो खरीद ले। या तो ऐसा इन्फॉर्मेशन हो तो हमें भी बता दो, स्पेस ही बंद कर देंगे, वही सौदा कर लेंगे। नहीं है अपने पास तो अपन जो करते हैं वही करेंगे। सो विद दिस थिंग एंडिंग दिस स्पेस। धन्यवाद कि आप लोग इतने लेट भी ज्वाइन करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो, मुझ पे नहीं जो हम लोग सब मिलके करते हैं उस पर विश्वास करते हो। हम कभी आपका विश्वास नहीं टूटने देंगे। कभी कभार देखो परिवार है ना, परिवार में है ना, जब घर पे रहते हैं बर्तन बचते हैं, आपको सुबह सोना रहेगा, आपकी वाइफ खाना बनाएगी, कुकर की सीटी भी बच जाएगी, बर्तन बच जाएंगे, बच्चे स्कूल जाने रहेंगे, आपको लगेगा है आवाज क्यों आ रही। वैसे ही सबको हम कंट्रोल नहीं कर सकते यार। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी XYZ को बुलाया, वो आके कुछ बकवास कर देगी, अब मुझे क्या पता क्या बोलने वाला है, मैं उसके दिल में थोड़ी बैठा हूँ, किसी के मन में तो कौन आके क्या बात करने वाला है क्या नहीं कर सकता। हर चीज मेरे कंट्रोल में, कितना कंट्रोल कर सकता हूँ। या तो पहले मुझे बोल दे मैं यही रट्टी लैंग्वेज बोल के रटा हुआ है वो बोल के जाऊंगा। अब मुझे नहीं पता कौन क्या बोलने वाला, कौन किस पर्पज से आ रहा है, कौन किस मकसद से आ रहा है। हम जिन पे विश्वास करते, दिल से विश्वास करते, उनको बुलाते। क्वेश्चन पूछने में हमें विश्वास लगता है क्या। प्राजी आए, प्राजी को इनवाइट कर देंगे। जगवीर आता है, विश्वास होता है कि हाँ मार्केट की बात करेगा, ये करेगा। अब कभी आके फॉर एग्जाम्पल प्राजी कुछ बोल दे, अब प्राजी का इच्छा, अब मैं इनको थोड़ी कंट्रोल कर सकता हूँ। यार रणवीर आके कल को कुछ गाली गलौज करते, या मैं खुद आके गाली गलौज कर दूं, किसको क्या पता कौन कब क्या आके बोलेगा। यार ये चीज मेरे कंट्रोल में नहीं होती, एज सिंपल एज दैट। सो आई कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग।
और हो सकता है उस टाइम मैं गाड़ी चला रहा हूँ या मैं वॉशरूम गया हूँ और पीछे कोई खो जाए, मुझे भी तो 2-5 मिनट लगता है वापस के भाई क्या हुआ था पूछने में, मैं भी व्हाट्सएप पे पूछता हूँ। तो ये देखो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। कोई ऐसा घर बता दो जहाँ झगड़ा नहीं होता है। मेरे मॉम डैड को शादी हुई ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हो गए, वो आज भी झगड़ा करते। प्रॉब्ली अगर आपके मॉम डैड 100% रहेंगे वो भी झगड़ा करते ना आज उनकी शादी को भी मतलब 40-50 मैं पकड़ता हूँ, सब 30 से लेके 50 की रेंज में रहेंगे, एवरेज 40 की एज भी पकड़ता हूँ। तो मॉम डैड भी 60-65 के रहेंगे अपने, वो भी झगड़ा करते हैं। तो इतने साल शादी के बाद क्यों झगड़ा करते हैं? घर है भाई, झगड़ा होगा ही। ये स्पेसेस है, यहाँ कौन किसका सगा है, कौन रणविजय मेरा सगा है, मैं रणविजय का सगा, एक दूसरे में विश्वास करते हैं। Amit sir, you are saying something because you are not audible, or have you closed it? I think it's fine. His voice has gone. Yeah, fair enough. Good night, guys. Good night from my Yeah, side. let's end this session.